क्या ला? मिनी वॉच करूँ ना इसको? Got it? सर मैं एक हाँ, तेरे को co-host बनाना है। पोस्ट करा तो मैं कहाँ से करूँ? ये पार्टिसिपेंट अर्चना ज्वाइन करना। मैं यहाँ से डायरेक्ट मोबाइल से करता हूँ। हाँ हाँ मोबाइल में ज्वाइन करता हूँ। चालू रेकॉर्डिंग कशाला झालं? बरोबर आहे, रेकॉर्डिंग सुरू केली आहे. माझ्या इथे रेकॉर्डिंग झाली. मी जाऊ मग? All the participants, delegates, and students. The post-plan decisions will be started after the detail.
Very good morning, actually. Very good morning to one and all. Welcome to the first plenary session of today's one-day conference, which is going on in VLJS's premises. For today's this plenary session, resource person, we have with us Professor Subhashree Mukherjee from former IKSC coordinator from Bangalore Mahavidyalaya, Nagpur. We also have Chairperson Dr. Kartik Pankar, IKSC coordinator, JP Patel College, Bhandara. I, myself, Sujata Damke, the Department of Geography, is hosting this session. I humbly request Honorable Chairperson Dr. Kartik Pankar, IKSC Coordinator, Jen Patel College, Bhandara, to preside the chair as a chairperson. I also humbly request Resource Person Professor Subhashree Mukherjee, former IKSC Coordinator, Kamlanegro Mahavidyalaya, Nagpur, to preside as a resource person. Professor Subhashree Mukherjee, please preside on the desk. I also humbly request IKSC Coordinator Dr. Kapil Singh sir to come on dais. Dignitaries on the dais, off the dais, delegates, participants, students, and banana. Today, one-day national conference, NAC's sponsored national conference on new teaching methods in higher education, introducing technology is going on. And after the inaugural function, we are here to listen and thoughtful conversation in the post-plenary session. Before directly jumping on the session,
it's their time to get introduced first with the chairperson as well as the resource person. We have Dr. Panikar sir, Professor Panikar sir. He is a member of Maharashtra State Government Committee for Implementation of that is National Education Policy for HEI teachers. He is institutional coordinator for International Network for Quality Assurance Agencies. Yeah. So, I'm extremely sorry. Dr. Karthik Panikar sir, Honorable Chairperson of today's plenary session, is the head of the English Department of J. Patel Arts, Commerce and Science College, Bandara. He is also IQAC coordinator. He has 26 years teaching experience at UG and PG level. Chairperson of the Board of Studies in Languages of Science faculty, Dr. Panikar has to his credit more than 20 research papers in reputed peer-reviewed journals. He has edited 8 textbooks which have been prescribed for different undergraduate programs of the university. He has been a member of the Syllabus Revision Committee for different UG courses. Let us get introduced with our today's resource person, Professor Dr. Subhashree Mukherjee. Her remarkable achievements are just within points she has summarized. She is a member of Maharashtra State Government Committee for Implementation of National Education Policy for Higher Education Teachers, Institutional Coordinator for International Network for Quality Assurance Agency Higher Education, Barcelona, Spain. She is a member of Curriculum Designating Committee for International Postgraduate Diploma in Quality Assurance in Asia Pacific Quality Network, Shanghai, China. She is a certified examiner for University of Cambridge, London, UK. She is also a member of PGTD Board of Studies, Rashtrasangha Guruji Maharaj Nagpur University. She is nodal officer for several central and state government schemes. She is quality consultant for several universities and colleges in India. She has delivered talks and chaired sessions in several national conferences. With English and foreign languages, she has ample many universities like Hyderabad and other reputed universities in India. She is a member of editorial board of several national and international journals. Successfully, she has completed UGC-sponsored minor research projects, several research publications in reputed national and international journals, books, and seminar proceedings. She is also a PhD supervisor. Such a renowned personality we have today to have intellectual talks in this first plenary session. It's our responsibility, moral responsibility, to give a warm welcome to our chairperson and resource person. At the outset, I would like to offer very warm welcome to our chairperson, Dr. Panikar sir. Welcome, sir. I request our coordinator, Dr. Kapil Singh sir, to offer warm welcome to our resource person, Professor Mukherjee ma'am. Professor Subhashree Mukherjee. The bouquet and the memento, love and respect from Vasantha Government Institute of Arts and Social Sciences, Nagpur. She is there to have her deliberations, thoughtful deliberations on teaching methods in India, new world. Thank you, sir. I humbly request Dr. Talmale sir, Assistant Professor in the Department of Geography, to give a warm welcome with love and respect to Dr. Kapil Singh sir, IQAC Coordinator of our institute. Society and
professional world continue to evolve and change with the growth of technology and the beginning of the fourth industrial revolution. This in turn has had tremendous impact on educational sector. Class should not be considered of or consisted with words only that led to information. Indeed, it must take care and cater the students regarding creativity aspect among themselves. With this vision, academicians need to join global path, which is the core theme of this one-day national conference. Today's the major theme of first plenary session is, I would like to read, blending learning. The need of the earth, there is a question mark. So there will be thoughtful conversation between the resource person and we all participants regarding blending learning. So blending learning, the need of an earth. So let us have some vision on the blended learning. Blended learning is the technology mediated instruction or mixed mode approach to education. That is combination of online education materials and opportunities for interaction online as well as offline, that is within the classroom. Is there any need today on this aspect? We need to broaden our horizon of thinking and action. For that purpose, our resource person is going to interact with us. With this vision and all these warm welcomes and all that, I would like to invite due kind permission from the chairperson, Dr. Panikar sir. Is there permission, sir? Thank you very much. I humbly request our resource person, Professor Subhashree Mukherjee, to take the charge. Thank you. Namaste to all of you. First of all, I would like to express my gratitude towards Dr. Anuradha, the director of the institution, Dr. Kapil, the IQAC coordinator of Central Night Government Institute. Not only a dear friend, but a brotherly figure, like my elder brother. Distinguished staff members of the institution, delegates who have come from different parts of the city or maybe from outside Nagpur as well. Some have joined online too, what I can see as your event is in hybrid mode. Some students were also there in the morning. We are still left with a handful. It's good to see them be a part of such a quality initiative. I would firstly like to congratulate the institution for selecting a topic which is of great relevance, especially considering the post-COVID implications. Now, we were suddenly thrown amidst the wave of COVID, and why I'm using the word thrown, because we were thrown and we plunged into the wave, and we were hardly trained to use the technology for teaching as well as learning.
And I sincerely appreciate the efforts of all the institutions, all the teachers, all the students who didn't relax, who didn't sit back, and who found out ways and means of fighting this epidemic. And as it is said that the show must go on. So we kept it going, though it was, I would not call it online teaching. I would rather prefer calling it an emergency teaching. Because we were in an emergency situation, and with the minimum tools, with the minimum training that we had, we immediately started classes from the corners of our home, and we had several problems. A session like this is meant to actually put into the minds of the teachers that this is the form of learning which has come to last. Though COVID, we say the same about COVID. It has come to last. It will be a part like maybe the other diseases like typhoid, malaria, and so on. So people are saying, doctors, medical experts are saying that it has come to stay for some time. Similarly, the things that it brought along with itself, like technology-aided learning and all. So even that has come to stay with us for a long time. In fact, you must be aware of some industries, some corporate giants who have resorted to online and offline, a kind of combination, a kind of hybrid thing, even in their working. Like many people are still working from home. Big IT giants have taken the decision of 3-day offline and 3-day online. So it's something which has its own advantages as well as disadvantages, I would say. And we all saw how things went when we started this online teaching and the students started learning in the online mode. Now, the topic, as I said, which the institution has selected is of great relevance. So once we consider the importance of technology in teaching, the only thing that comes to my mind is blended learning, because I don't think ever we are going to back to that only traditional mode, only in inverted commas I'm putting, only traditional mode of chalk and talk method that we all know. So we are definitely going to make technology a part of our lives, a part of our teaching learning process. And in course of that, we have to give due importance to blended learning. That is the reason why I have chosen this topic. So first of all, NAC always says that you should have an objective and followed by the outcome. So once we talk of this session, so what is that you are going to gain out of this session? So we will first understand what is blended learning. Then we also need to know why blended learning. It's not because somebody has organized, the host institution has organized this event and you should actually accept, but you should yourself understand why blended learning is to be a part of our education process. Then we need to know the different models of blended learning, and we will also try and understand the benefits of blended learning. Now, some definitions I have put in here in my presentation, that it is a combination of the internet and the digital media with the already existing classroom forms. So we do have a concrete brick and mortar classroom. Along with that, we need to have an online environment, a digital environment, which will require the co-presence of the teacher as well as the student.
So as we get along, these definitions will be more clarified. They will gain more clarity once we go ahead with the presentation. I have just taken two definitions. The second one is about blended learning being an effective combination. Mark the words which I have made bold. It is an effective combination of different modes of delivery. Now, this term has not emerged out of COVID, let me tell you. To be very honest, if I consider the history, which I have not taken in the presentation, but just to add to the information, I would just like to say that somewhere down the line in the 1960s, the concept was used very vaguely in the form of a mixed teaching for very few countries, very few advanced, or rather I would like to use the word used by Dr. Kaude in the morning, that is the developed nations used this concept, not the term, mind you. The term primarily was used first time somewhere around the late 1990s. To be more precise, 1999 was the first time when this term was used by an interactive teaching learning institute based out at Atlanta. And formally, the concrete form of the word which is used today, in the sense that we are using it today, this was actually it came into existence in 2006 with the help of a book written by Bonk and Graham, which is called the Handbook of Blended Learning. So that gave this term a concrete form, which the similar form in which we are using it today. Now, the simplified meaning, definitions sometimes confuse us because the technicality of the language is a little bit difficult to understand. So, I'm sorry, I forgot to ask you, are you all comfortable in English, or we can use the combination? English is okay with all of you? Sure. All right. Because understanding is more important rather than the language. So I'm comfortable in the other two languages as well. So if you feel at any point of time you want me to switch, I can do it. You can just make a sign by raising your hand or something. All right. So the simplified meaning stands like it is the combination of electronic-based learning, web-based learning, e-learning, whatever we have in mind when the word E comes. The E stands for electronic. So all this combined with traditional learning. The traditional learning, when I say, I mean the brick and mortar classroom and the teacher using the chalk and talk method. All right. Now, it is definitely a formal education program which combines both, as I said. We will look into the aspects of both the offline classroom, as you call it, the brick and mortar classroom, as you call it, and the online computer-based learning, how we are supposed to blend these two. Now, when we talk about the offline class, there are several things which are involved. There are several components which are involved. Like when we go for this offline class, at any point of time, we get into this conversation mode with our students. Like, and such classes are always interesting when it is a conversation type of a class, when there are negotiated interactions, wherein a teacher may raise a point and the student may complete it in another way. So all these are actual teaching learning tools which NAC wants you to incorporate, and then on the basis of that it will give you the 350 marks which is due in the second criteria. All right. So for that, this method of offline classroom, it also gives us a scope for production of new ideas, as you can see. Then
Collaborative learning is there in both the modes, I would say. This collaborative mode, especially in the offline classes, we can have brainstorming sessions. We can put students into groups, and then the application of the learning is the key. That is what I feel. I sometimes ask my students that since which standard have you been in touch with English? So they say first standard. Most of the students who come from the Marathi medium or the Hindi medium backgrounds, they usually start learning English from the level 1, that is the standard 1, which we call. So my question to them is that how many years, rather to the students present here, how many years do you actually take to learn your mother tongue? And I mean, it's an open-ended question for you. How many years have you taken to learn your mother tongue? I mean, when does a child in your house start using the mother tongue? At which age? कितने साल में बच्चा बोलने लगता है आपके घर में और मातृभाषा बोलता है बिल्कुल? तो 3 साल, yes, 3 years. तो फिर आप इंग्लिश सीखने में, जो मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों को बोलती हूँ, आप कितने साल के हो? आप ऑब्वियसली 3 साल से बड़े हो, तो आप क्यों नहीं सीख पाए अभी तक इंग्लिश? और आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही आप सीख रहे हो. That is when the human mind is completely developed, which happens at the age of 6 years, when the human brain is completely developed. So from that age, if you're starting today, you are not 16, you are 18, and why don't you still know the language? So the answer is the last point in the brick and mortar class section which I've put. That is, we have never taught English as an application-based language. We have not taught applied English in any of our classes. Neither are we teaching it in the undergrad or the postgrad level. All right. So that is the reason why our students fail miserably to understand or to communicate. When I talk of communication, I talk of it as a two-way process, which includes speaking, listening, understanding, and as we call it in English as LSRW, the 4 skills that are needed to master any language. किसी भी भाषा को आप अगर बोलते हैं कि हमारा इस पे प्रभुत्व है, तो आपको 4 चीजें उसकी आनी चाहिए. आपको कोई बोले तो आपको समझ में आना चाहिए, आप बोले तो किसी और को समझ में आना चाहिए. So why does this not happen in case of English? So this kind of brainstorming you can give a point and the students can do in your class and focus more on application-based learning, which will actually help the students to learn whatever is useful for them. So that doesn't apply only to English, it applies to other subjects. Moreover, in an online setup, the student can learn at his own pace. Pace is the speed of learning. So if, for example, if we have children who are working, so they don't have time to attend a maybe 10 to 5 college. So that child, if he is having his own gadgets, then he can sit at the leisure of his house and then he can do this learning. So that is definitely a major component of online learning. Moreover, the language skills are obviously sharpened, especially I'm talking about English as a language here. People are forced to understand English because English is the language of the digital world. So automatically, when you go for digitalized or online education, automatically the onus shifts. The onus shifts from local language to the global language. So that is something which has to be kept in mind. Moreover, the teachers have to do a lot of hard work to initiate this process. In the beginning itself, this transition, remember when you first took your online class, yaad hai aapko aapka pehla class, you were very confused like what to do, which, I mean, some techno-savvy people might be there in the audience, but most of you, I mean, aapko yaad hai ki videos logon ke on reh ja rahe the,
बनियान पहन के शॉर्ट्स पहन के लोग कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे थे एंड स्टफ लाइक दैट. क्लासेस टीचर्स ले रहे थे एंड एक बहुत बढ़िया जोक भी आया था व्हाट्सएप पे कि टीचर ने पूरा क्लास लिया, उसके बाद पूछा कि आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछिए. तो बच्चे ने हाथ उठा के बोला कि मैम वो जो झाड़ू मार रहे थे एक आदमी, वो कौन थे. तो this is something, you know, like background blur kaise karna and stuff like that. We were not aware of all these things. So that is why I deliberately used the word emergency teaching. When I said that the switch, the transition was really difficult for us, but somehow we managed it because we wanted to present authentic content to our students. जो भी हम उनको दे रहे हैं, it should be authentic. Now, how do you check the authenticity of the resources that are available? Now, every resource that is there in your hand or that is there on the net is not authentic. So the authenticity check has to be done by you. काश गूगल के पास भी ISI मार्क होता और वो लग जाता वो कंटेंट पे, वो नहीं है. तो हमको कहीं ना कहीं से उसको वेरीफाई करना है, अच्छे रिसर्च जर्नल्स से लेना है, more than anything, whichever journals are of good repute, we should take the matter from there. Practice happened because children found it quite interesting, you know. आप लोग सभी बोलते होंगे कि आपके बच्चे, मतलब the senior people who are here, बच्चे ज़्यादा टेक्नो savvy है आपसे. In fact, even the younger ones, like the toddlers, I would say, even they are so smart and very techno savvy. Let me tell you, I was shocked to see my own 1.5-year-old nephew. Directly, there is a folder of Google, and there in that folder there is YouTube. So he knew how to open the Google folder, then go to the YouTube, and then open his favorite Twinkle Twinkle Little Star. So I was shocked. So children are that techno savvy, and this is I don't know what the minimum age of being techno savvy is, but then they love to do it, so they practiced a lot. Whatever assignments we gave them, they completed it. And they used to say from the other side, मैम ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये हो रहा है, वो वाला बटन वहाँ पे है, उसको क्लिक करो, ऐसे आपको 9 डॉट्स दिखेंगे. वो 9 डॉट्स से हम फेमिलियर कैसे हुए? मतलब थ्रू different trial and error methods we became techno savvy. But I don't know, this generation is inborn techno savvy, you know. So we can also check and monitor the kind of work that a child is doing. There are several applications for that, let me tell you. Now, if you NAC is asking for ICT enabled teaching, NAC is asking for inclusion of digital technology. I'll go to another very important part, which is the NEP. While introducing me, if you were attentive, they said that I am a part of the National Education Policy Implementation Committee in Maharashtra. So what we were deciding in the meetings is that how to bring technology to the doorstep of the individual in such a way that he or she doesn't shy away from technology. Now, there are many people, especially I'm talking to an audience which is primarily from arts, humanities background for that matter. So most of us from this background are not so techno savvy, and that is the reason आप मुझे ये बोलेंगे कि मैम अगर टेक्निकल होना रहता तो हम यहाँ क्यों होते? Agreed. तो because it's something कि आप फिर से हमको वहीं ढकेल रहे हो जहाँ हम नहीं जाना चाहते थे, इसलिए हम यहाँ आए. Friends, we have to somehow keep pace with the time. वक्त के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे. That is for sure. So that is the reason why we have to use these applications, wherein if you develop a Moodle course, I'm taking it for granted that you know what a Moodle course is, because I don't have that much time to explain what a Moodle course is. It is a complete online certificate course which you can design for your students, because
when I talk of this, I'm talking about how you can increase your marks in all segments. By segments, I technically mean the criterion. So in criterion 1, you have questions based on certificate courses. So they ask you how many certificate courses have you taken. In the next question, they ask you how many students have participated in those number of certificate courses. So when I go to different colleges, the problem is all over India. Please don't think that Maharashtra is behind. Maharashtra is far ahead. And trust me, if you think that South India is very advanced, I am sorry to deny this on this platform. It's not that at all. I won't take names of universities, but I have been to several universities, even central universities. You look at central universities with great awe and reverence. आप ऐसे देखते हो, Central University, this is your expression and kind of respect you have for them. But even they do their own work. There is a lot of work being done in these universities. Lot of work, lot of research, lot of funding. Nothing below 1 CR. 1 crore का minimum funding आ रहा है. हम हजारों के लिए तरस रहे हैं. सर को 30,000 वगैरह कुछ मिले होंगे इसको चलाने के लिए. तो when we are looking ahead at these universities, let me tell you the truth behind them. They are doing their own work very well, but that is not what NAC expects. No one can work in isolation. NAC says that it has to be collaborative work. The National Education Policy says that joint efforts hone chahiye, students, teachers, all stakeholders for that matter. So when we talk about this, then we understand that a kind of certificate course like a Moodle, if it is designed by you, if it is designed by the teachers, taking the help of some techno-savvy people available in your institution, you can have a workshop on that as well. So what happens that different criteria के जो आपके score हैं, वो अपने आप कहीं ना कहीं आप उसको कर जाओ. See what happens. I always tell people from all institutions कि आप कोई भी question को blank नहीं रहना चाहिए, ये ensure करो, because 0 out of 10 is 0%. Okay, but even अगर आपने उसमें आधा काम किया है, आपके 50 लोगों के स्टाफ में से अगर 25 लोगों ने भी किया है, तो you get 50% marks for that. So 50% is definitely better than 0 किसी भी दिन. तो इसलिए मेरा ये कहना है कि और हर एक को, my request to the IQAC coordinators and the principals, I know some are here, IQAC coordinators at least है, if not principals, is हर department को हर चीज करने मत बोलिए. If you want to increase the score, you identify certain departments and tell them according to their strengths. Please do not dilute the purpose of the entire NAC. The purpose, if the purpose of your, कोई भी बोलेगा कि मुझे कम से कम score चाहिए, no one will say that. Everybody wants to go for A or A plus or A double plus for that matter. So I always suggest practically feasible ideas, practically possible solutions, जो possible. तो maybe अगर आपका एक multi faculty college है, तो आप हैंडराइटिंग पे एक कंपटीशन बच्चों की ले लीजिए, एक सर्टिफिकेट कोर्स ले लीजिए कैलीग्राफी पे. आप उस बंदे को मत बोलिए कि आप एक कैसे इंटीग्रेटेड कोर्स डिजाइन करना है यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, उसको मत बोलिए. दिस इज माय सजेशन. सो व्हाट विल हैपन, every department will have their own share first of all, and the purpose कि ये आप monitoring कर सकते हो. You have assigned each department कि आपको ये particular चीज का आपको ध्यान रखना है और ये आपको करना है, and that person will definitely be accountable to आपने जो बोला है. So for that the IQAC coordinator has to have a very sharp vision. बाज की नजर उसकी होनी चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट किसमें स्ट्रेंथ्स भी एंड माइंड यू वीकनेसेस भी, सबके स्ट्रेंथ्स भी है वीकनेसेस भी है. तो आइडेंटिफाइंग दैट ऑन द बेसिस ऑफ
in many colleges people say कि वो सुनता ही नहीं है वो particular department वाला. आपको वो कला जो है वो आनी चाहिए, कैसे उसको काम कराना है, कैसे उससे सुनवाना है. Alright? So I'm sorry. So ये the picture itself is self-explanatory. इस तरह से blending हो रहा है learning का. You see a tab, a laptop, book है, mobile है, सब है. जो भी साधन अवेलेबल है उसको मिक्स करके हम लर्निंग को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे. We will make it more effective, as I said in the beginning. Now, these are again some of the components which you will keep in mind, like human beings and technology का blending हो रहा है. So, what happens in a live class when you talk to the students? Now, Dr. Kavade was giving you examples, anecdotes, real life examples he was citing. तो उससे क्या होता है? The class becomes more interesting. So motivation आप उनको अलग आज का टॉप मोटिवेशन है ऐसे तो नहीं आप शुरू करो, ठीक है? तो even while teaching whatever subject, I'm not very sure whether people from other backgrounds are also available, but generally IQAC coordinator कोई आए हैं तो उनके कॉलेज में बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप उनको एग्जाम्पल्स बीच में पिच करने बोलिए जो जिससे वो बहुत स्टूडेंट्स दे फील गुड फ्रॉम इनसाइड. यू कैन से फॉर एग्जांपल यू कैन साइट, अगर आपको बच्चे को मोटिवेट करना है, डल आप देख रहे हैं क्लास बिल्कुल ऐसे आके बैठा है फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, गिव देम एग्जांपल्स ऑफ फेलियर्स. एग्जाम के बाद वो बच्चे आए हैं, फेलियर्स के एग्जांपल दीजिए. टेल देम कि कैसे लोग फेलियर के बाद सक्सेसफुल हुए हैं. स्टीव जॉब्स का एग्जांपल दीजिए जो एप्पल के सीईओ है, और इमेजिन स्टीव जॉब्स को पहली नौकरी जो थी उनकी उससे निकाल दिया गया ये बोल के कि बंदा टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल नहीं है बोल के उसको उसकी पहली नौकरी से निकाल दिया गया था. एंड आज इतिहास देखिए वो क्या बने हैं. अगर आप स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं तो मोटिवेशनल बच्चों को बोलिए कि माइकल जॉर्डन द लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर, he was not even selected in his school basketball team. मतलब आगे चल के दुनिया का सबसे महान जो बास्केटबॉल प्लेयर बनता है वो अपनी ही स्कूल के बास्केटबॉल टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ था. ऐसे मोटिवेशनल एग्जांपल्स दीजिए बच्चों को. सो दैट विल यू नो पेप देम अप कि वाओ अगर वो तो मैं क्यों नहीं. लियोनेल मेसी द ग्रेट फुटबॉल प्लेयर 4 साल की एज तक खड़े नहीं हो पाते थे, he couldn't even stand, उनके पैर में प्रॉब्लम है, और उसको उन्होंने कितने बड़े इसमें कन्वर्ट किया. देखिए ही इज वन ऑफ द लेजेंडरी फुटबॉलर्स ऑफ टुडे. Personal examples you can give of some you know benefit, if it can stand as a beneficiary thing for your students. Apart from that, in a face-to-face interaction like this, we understand the feedback. अलग से feedback नहीं लेना पड़ता है. बच्चे नॉड कर रहे हैं, I can see your face. Some people are nodding. किसी किसी को थोड़ा सा नींद आ रहा है तो वो सिर्फ पल के झपका रहे हैं. देखते हैं ना. In a live class it happens. Okay, I tell my students कि आपको ऐसे करने में भी हो रहा है तो you just blink कि yes, I know you have understood. All right. So ये immediate feedback we get, then automatically you know the flow comes. The flow comes, fluency in the language is there when we speak. And obviously we have to make some sense and be relevant. Examples should be related. मैं आपको मोटिवेशन का एग्जांपल देके एक ऐसा ही एग्जांपल दे रही हूँ जो मोटिवेशनल है. ये रेलेवेंस that you have to keep in mind. Discipline better होता है ऑनलाइन में. All of you must agree. हमने ऑनलाइन क्लास अटेंड करने लगते, मतलब ऑनलाइन अगर हम कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं तो हमने क्या नहीं किया है. आप एक बार ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के इमेजिन करिए क्या क्या फ्लैशबैक में जाके कि ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स किया, किसी ने ओरिएंटेशन किया, किसी ने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, किसी ने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, तो हमने क्या क्या किया है. तो डिसिप्लिन कहाँ गई? इट्स थ्रोन टू द विंड्स. डिसिप्लिन हियर आपका मन कुछ भी कर रहा है या मन में कुछ भी चल रहा है, यू आर फोर्स्ड टू डू दिस. आप मुझे देखकर यूं करने पे मजबूर हो रहे हैं. ऑलराइट, यस. सो दिस डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड वेदर वी वांट इट और नॉट. Technology mobility is the biggest thing. So
Dr. Panikar could not be here, तो वो हम ऑनलाइन उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो मोबाइल है, मतलब सर की मोबिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं हुई। आप एक कोर्स अगर कर रहे हैं और वो कोर्स करते करते अचानक आपको कोई और शहर में जाना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, आप ऑन द वे आप ईयरफोन्स लगा के मोबाइल पे यू कैन वेरी वेल बी अ पार्ट ऑफ that event. So, as I told you in the beginning, once we prepare the content, as we discussed in the previous slide, that authentic hona chahiye content. Along with that, you also make it a point that it is more structured. More structured. आपको पता है कि यही अगर हम ऑफलाइन बोलते और सामने मेरे टेक्नोलॉजी नहीं रहती, तो मे बी बोलते बोलते पॉइंट थोड़ा इधर उधर, ये पॉइंट इधर उधर होने नहीं देता है। हेलो, कम बैक, वापस आओ, ये मुद्दा था। कई बार बोलते बोलते हम मतलब I was there 15 years back, maybe 18 years back. I was sitting in an orientation course, and the resource person came and said, "कि lecturers are the worst audience." Because वो बोलने की आदत होती है, सुनने की नहीं। तो वो मैंने गार्ड बांध ली दिमाग में, ये worst audience के सामने बोलना है, ठीक? And that is a fact, you know, because कुछ भी बोलो तो उनको लगता है ये तो मुझे मालूम है। I know this, okay. So structured होना बहुत जरूरी है। Tracking and control, as I said, there are applications wherein have you been to sites like DOAJ and all? Am I making sense? You're able to understand what I'm saying? Inflipnet, सुना है all of you? DOAJ sites, Directory of Open Access Journals, all right? एक चीज वहां पे अगली बार जाएंगे तो देखना, नंबर ऑफ हिट्स आते हैं वहां, हाउ नंबर ऑफ विजिटर्स आते हैं, कितने लोग, तो ये ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। आपने जो मूडल कोर्स डिसाइड किया है, मैं अलग अलग क्राइटेरिया को टच कर रही हूँ कहीं ना कहीं, तो आपने मूडल कोर्स डिजाइन किया, क्राइटेरिया 1, उसके बच्चे पार्टिसिपेट हुए, अगेन क्राइटेरिया 1 का और एक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप यहाँ पे बच्चों का अटेंडेंस, उनका कितनी देर वो बच्चा टाइम स्पेंड कर रहा है। लाइक if you have put a lecture, an online video lecture which is say of half an hour duration, और बच्चा उसको फॉरवर्ड करके 5-7 मिनट में देख लिया है, तो दैट आल्सो यू विल कम टू दैट। तो ट्रैकिंग बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। अभी मैं आपका मेंटल ट्रैकिंग कर पा रही हूँ क्या, आप कहाँ हैं? मे भी किसी के घर में गुलाब जामुन बने हैं और वो जल्दी से निकल के आया, तो उसका ध्यान है कि वो गर्म थे, ठंडे में वो मजा नहीं है। ऑलराइट, सो ये चल रहा है, आई कांट ट्रैक योर मनी, ठीक है। मे भी कल कोई फिल्म देखने गया था, तो वो हीरोइन याद आ रही है जो शिफॉन की साड़ी लहरा के मस्त थोड़ी चल रही थी, ये कौन खड़ी है सामने, ठीक है। तो अगेन मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक ह्यूमन माइंड, यू नो, बिकॉज़ इट्स द फास्टेस्ट स्विफ्टेस्ट थिंग दैट इज देयर ऑन द प्लैनेट। सेल्फ स्टडी के लिए डेफिनेटली वी गेट मोर टाइम, बिकॉज एज इट इज सेल्फ पेस्ड उसका स्पीड उसका सेम अपने पेस पे हम कर सकते हैं। यू नो, वी ऑल टीच इन मल्टीपल एबिलिटी क्लासेस, बच्चों की लेवल्स अलग अलग है। एक आपके क्लास में बिल्कुल बहुत कम मार्क्स मिलने वाला बच्चा हो सकता है, so it's definitely cost effective, as I said earlier as well, because obviously if I belong to another city, then फ्लाइट का खर्चा, यहाँ मैं आऊंगी, मेरे रहने का, खाने पीने का, it is definitely this is more pocket friendly. Then global reach, दुनिया में कहीं भी ये टेलीकास्ट आप कर सकते हैं, any nook and corner of the world. Now, methods and media
का कॉम्बिनेशन बहुत स्मार्टली करना है. आई एम कमिंग टू द पार्ट वेयर you as teachers, where we as teachers play a very vital role कि कौन सा यूज करना है टेक्नोलॉजी, कैसे करना है. Now we have the combination of the social context and strategies in methods, and we have the delivery channel and the communication mode in media. Now one by one I will explain this. Now socially, you must be knowing that every child has a different method. Even you as a student had a different method of learning. किसी किसी को अकेले पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, किसी किसी को दो लोग हो, 1 to 1, मतलब तू पहले आंसर बोल फिर मैं बोलता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ तू सुनना, ऐसे करके, तो 1 to 1. Some people learn in a group. उनको ग्रुप लर्निंग होता है कि चलो तुम कुछ पॉइंट्स बोलो, तुमको सारा दिमाग में चले जाएगा. कोई ये सोच सकता है कि कैसे ऐसे दिमाग में जा सकता है जो 1 to 1 लर्निंग वाला हो या मे बी अलोन लर्नर हो. तो सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट हैज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग अ लर्निंग मेथड फॉर हिम. इन अ कम्युनिटी मींस एक वाइडर ग्रुप में, बड़े पैमाने पर एक लेक्चर हो रहा है, पब्लिक बैठी हुई है, वहां पे भी लोग सीखते हैं. ठीक है, some might feel कि वहां कैसे सीखा जा सकता है, इतने लोगों में, there is so much of noise, so much of chaos. All right. Now strategies which we will use as teachers. So see, exposition technique I would say will slightly be for the slow learners. अब ये again term आपको ध्यान में आया, it is criterion 2. स्लो लर्नर्स का क्वेश्चन, अभी नया जो फॉर्मेट है जो 1 जून 2022 को इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें ये एसएसआर में नहीं है, बट इट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ द AQAR. तो AQAR में आपका ये क्वेश्चन अभी भी है, यू हैव टू राइट 500 वर्ड्स, 200 वर्ड्स मिनिमम ऑन स्लो एंड एडवांस लर्नर्स, एंड व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज, व्हाट आर द टेक्निक्स, different methods that you are using for them. All right. कई लोगों को इसमें ये प्रॉब्लम आता है कि हम क्या कर सकते हैं for slow and for advanced learners. All right. Now exposition method is for the slow learners. What do we do exactly? In exposition, the teacher defines the concept, gives the concept. Along with the concept, the teacher gives some explanation. Okay. So explanation of the concept in the form of elaboration through different examples. This has to be done for slow learners. उनको फॉर एग्जाम्पल वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे आप, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद उनको एग्जाम्पल देंगे कि ये होता है उसमें. ये स्लो लर्नर्स के लिए मस्ट है, उनको एग्जाम्पल देना ही पड़ता है, नहीं तो उनको समझ में नहीं आएगा. ऑलराइट. नाउ द इंस्ट्रक्शन मेथड इज फॉर द एवरेज स्टूडेंट, थोड़ा बेटर जो उससे. In instruction method, you will give instructions to the students for doing a particular task independently. Okay, you will give the instruction, but the student will do it independently. Got it? Then guided discovery. In this method, you will guide the student for good and the very good ones. You will guide the student, but the student will do that particular survey maybe on his own. For example, a survey may be done by the Department of Sociology, for example, like what are the gender related discrimination that are prevalent in the society today. Gender discrimination आपके फैमिली में है क्या, उसका एक क्वेश्चनर अगर बनाना है, तो गाइडेड डिस्कवरी में द टीचर विल टेल द स्टूडेंट कि वो क्वेश्चनर कैसे बनाना है, पर बनाएगा कौन, द स्टूडेंट. दिस इज गाइडेड डिस्कवरी. एक्सप्लोरेशन में रिसर्च तक बात जाएगी, तो दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द क्रीम, फॉर द एडवांस्ड लर्नर्स. ऑलराइट. सो थ्रू रिसर्च the student will try and find out different things for himself. Maybe the teacher can say the topic, या फिर अगर वो एकदम ही एडवांस है तो उसको बोलेंगे बेटा तू अपने टॉपिक ले लेते को, जो टॉपिक पसंद है उस पर तू रिसर्च कर और फिर मेरे को आके बता तेरा क्या रिसर्च हुआ है. ठीक है, एकदम एडवांस स्टेज. एम आई मेकिंग सेंस? समझ रहा है सबको?
Clear? Absolutely. Okay. These things are not very interesting, of course. So, अगर general talk होता related to maybe general preparation of SSR AQR वो अलग है. College ने बहुत exclusive topic लिया है. थोड़ा सा उसमें monotony आ सकती है. Now the channel may be face to face, online or offline. We are using the face to face channel. Online, some people are using it online, and offline जैसे हम classes हमारे normally होते हैं, the offline classes apart from COVID times जो है. So again, some students found it very easy and interesting in the online and face to face in the online mode. They were very happy with the online channel. Some said we cannot concentrate. हमको जब तक teacher सामने खड़ा नहीं होता है, नहीं बोलता है. Same applies to the teachers as well. Some felt very comfortable with that. Some were not. So talking about the mode, this at the same time all of you are listening, whether you want to listen or not. Okay. अगर यही recorded रहता तो अपनी सुविधा से सुन लेंगे कभी भी on time. मैं कुछ एक्सपोजिशन टेक्निक्स कभी कभी यूज कर रही हूँ, इसका मतलब मैं आपको स्लो लर्नर नहीं समझ रही हूँ, प्लीज. Now why blended learning? Right in the beginning I said this is one of the objectives of the session. Better learning experiences definitely for the students, definitely. Because as I said, they are more techno savvy, they are more techno affiliated. बहुत ज्यादा उनका रुझान है टेक्नोलॉजी की तरफ, गैजेट्स की तरफ. So they love that. More structured, as we have already discussed. The attainment of academic outcomes. Now NAAC is talking about outcomes. अगर आपने recent SSR देखा है जो 1 जून 2022 को चेंज हुआ है, उसके बाद आपने अगर देखा है तो 55 मेट्रिक्स पे आ गए हैं हम 93 से. 93 मेट्रिक्स के पहले हम लोग नीचे आ गए हैं अभी 55 पे. मतलब NAAC has reduced simple language में the number of questions. और अब इसमें बहुत है, मतलब ये मीठी छुरी है, मेरा ऐसा कहना है. मीठी छुरी मैं इसको क्यों बोल रही हूँ, काटेगी आपको जरूर लेकिन प्रेम से. तो पॉइंट ऐसा है कि आउटकम्स का जो क्वेश्चन है, दिस इज, स्क्रैच योर हेड्स फॉर दिस, this is a 90 mark question now. So it's going to kill you. Now many colleges are not aware अभी तक, मतलब हम मजे से सो रहे हैं अभी तक, ठीक है. अभी कहीं कहीं यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं SSR की, उनको मालूम है कि ये अभी 90 मार्क्स का हो चुका है. 45 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 45 मार्क्स ईच. ओके, तो there are so many steps. Recently there was, not recently, it's almost a year now, there was an AICT sponsored national induction program. 1 महीने का चला by शेगांव इंजीनियरिंग कॉलेज. बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है. वहां का एक बहुत बड़ा नेशनल इंडक्शन प्रोग्राम चला सब टीचर्स के लिए, जिसमें ये सारा बहुत था. और एंड दैट टू 1 year back. So I'm telling you this because I was a part of that event. मेरे 2 लेक्चर्स हुए थे क्योंकि 1 महीने का वो चला था. तो एक पहले हुआ, फिर 15 दिन बाद और एक हुआ. तो उसमें आउटकम्स पे मुझे बोलना था. एंड ट्रस्ट मी, इट वाज अ 1.5 hour लेक्चर, बट पीपल वर क्वाइट अवेक, जो कि जनरली ऑनलाइन फॉर्म में नहीं होता है. बिकॉज आई कीप ऑन आस्किंग अनम्यूट करके, आर यू देयर, तो आई वाज गेटिंग द रिस्पॉन्स. ठीक है, तो इसके इतने स्टेजेस है फ्रेंड्स. आउटकम्स, अगर आप आउटकम्स की बात कर रहे हैं, so as I said, it's a 90 mark question, 45 right from drafting the COs and POs, the course outcomes and the program outcomes को ड्राफ्ट करना है हमको. हमारी यूनिवर्सिटी ने सारे COs POs सभी कोर्सेज के ड्राफ्ट नहीं किए हैं. कुछ कोर्सेज के हैं थैंकफुली, उसके नहीं करने हैं. बट जो नहीं है जिन कोर्सेज के, तो वहां ड्राफ्टिंग से शुरू करना है. देन नेक्स्ट स्टेप इज actual mapping of the outcomes. Mapping of outcomes. Mapping of outcomes के बाद last stage आता है evaluation and attainment of outcomes.
सो पहले आउटकम्स क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन, जो मेरे 4 पॉइंट्स मैंने स्टार्टिंग में लिखे थे, ये अगर सेशन के एंड में सबको समझ में आता है तो लर्निंग आउटकम हैज बीन अटेन्ड। ऑलराइट, तो ये हमको हर कोर्स के लिए डिफाइंड है, हर प्रोग्राम के लिए डिफाइंड है। बाय द वे कोर्स वर्ड यूज होता है नैक में सब्जेक्ट के लिए, और प्रोग्राम यूज होता है जिसको हम कोर्स बोलते हैं, बीकॉम बीएससी वगैरह। ऑलराइट, so this attainment of outcomes has to be done properly, और फिर हम 90 मार्क्स स्टेक पे है, मतलब आप सोच लीजिए, इट्स अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। नाउ वाई ब्लेंडेड लर्निंग में ये सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, बिकॉज there are innumerable learning platforms now. There is mushrooming of learning platforms these days. There are many good students who are actually, they are doing wonderfully because of this. Because what they are doing, you must have heard about Coursera, Udemy, Upgrade, सुना है ना ये सब आपने? तो ये सब courses जो है बच्चे कर रहे हैं, और इनके certifications value रखते हैं in the long run when they go for job, because most of them are skill oriented courses. Again, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नैक ने कुछ एनईपी के पैरामीटर्स लिए हैं। अगर आपने AQAR अभी देखा है रिसेंटली, तो स्टार्टिंग में ही 6-7 ऐसे ब्रॉड पैरामीटर्स हैं कि व्हाट इज योर इंस्टीट्यूशनल प्रिपरेशन एज फार एज NEP 2020 इज कंसर्न। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको ये सारे जो गोले मैंने बनाए हैं उसमें आपको दिख रहे हैं, दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट। Now, project-based learning, technology integration, global connection अपने आप बढ़ाना है हमको, तो something which is small, just restricted to your traditional classroom cannot go global. So for making it global, it is mandatory for you to bring it to the digital platform. Then game-based learning is something which children love. Language teachers can go for it. Game-based learning, it's very good. Even commerce people can go for it. You have plenty of games available on the net. कि उनको बनाना कैसे है, नेट पे अवेलेबल है। सारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स वाले कर सकते हैं, साइंस वाले कर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर यहाँ कोई है तो। Direct instruction has a lot of scope in this. We can fix, slots for our students. जब पूरा restricted हम थे, लॉकडाउन का पीरियड अगर हम उसकी बात करते हैं, तो you must be getting more number of calls from your students from the college. फोन पे हम लोग बहुत इंटरेक्ट कर रहे थे, तो आप बच्चों को आप कई बार बोलते हो कि ये टाइम से ये टाइम में कॉल करो, तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस उनको दे रहे हैं। दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। देन पीयर टू पीयर कोचिंग, ये थोड़ा सा ऑफलाइन में ज्यादा हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं। यू टेल द एडवांस लर्नर्स टू कम इन फ्रंट एंड से कि आपको क्या समझा है, बच्चा अपने आप अलर्ट रहता है। अगर किसी को बोला जाता है कि आपको इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बाद, तो नेचुरली द पर्सन विल बी अटेंटिव, राइट? So a lot of focus automatically comes on the proficiency level and on the mastery of the child. उसको mastery अपने आप से आती है because he is more focused, you are more focused, the content that you are delivering is more organized, more structured. So automatically this, this whole thing is blended into giving you a wonderful outcome, learning outcome for the student. Now these are the 6 major models. बहुत ही सिंपल एक एक लाइन में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी। आई विल नॉट टैक्स यू मच एंड धीरे धीरे भले कुछ लोगों का उपवासों पर लंच का टाइम आ रहा है, तो आई वोंट स्टैंड इन बिटवीन लाइक अ वैम्प एंड स्टॉप यू फ्रॉम हैविंग फूड। तो क्विकली आई विल जस्ट डिस्कस ईच इन अ लाइन। यहाँ पे क्या होता है, फेस टू फेस ड्राइवर मॉडल जो बोलते हैं, इसमें क्या होता है, देयर इज अ टीचर इन अ ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग लाइक दिस, ऑलराइट, और ये टीचर ऑनलाइन लर्निंग कुछ टूल्स यूज करता है
फॉर सप्लीमेंटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मतलब ऑलरेडी जो वो दे रहा है ऑफलाइन में उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ ऑनलाइन मटेरियल देता है। आप लोग भी करते होंगे इसको। तो ये मॉडल का नाम टेक्निकली आपको जानना जरूरी है कि दिस इज द फेस टू फेस ड्राइवर मॉडल। ऑलराइट, नाउ वी हैव अ मॉडल कॉल्ड द रोटेशन मॉडल। द नेम इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। रोटेशन होता है क्लासरूम, लैब, ऑनलाइन, इसके बीच में, ठीक है। मतलब टीचर कभी मे भी एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है, ओके दिस इज हाउ यू हैव टू डेवलप योर लिंक्डइन प्रोफाइल। बहुत काम की चीज है बच्चों को बताने के लिए। लिंक्डइन प्रोफाइल ऐसे डेवलप करो, वो बताते हैं थ्योरी उसका, फिर बोलते हैं ओके लेट्स मूव ऑन, लैब में जाते हैं, अभी बनाओ। सो दिस इज द रोटेशन मॉडल। वापस वहां से आके हाँ क्या किया दिखाओ, तो प्रिंट दिखाता है अपने लिंक्डइन को। दिस इज द रोटेशन मॉडल। ऑलराइट, अब इसमें दो टाइप्स है, स्टेशन रोटेशन एंड लैब रोटेशन। अगेन बहुत शॉर्ट में आपको मैं बताऊंगी। अगेन आई पुट कि ये कौन से लर्नर्स के लिए है। सो कंप्यूटर स्टेशन इज फॉर एडवांस लर्नर्स, कोलैबोरेटिव इज फॉर द एवरेज स्टूडेंट्स एंड टीचर स्टेशन इज फॉर द स्लो। अगेन ब्रीफली अबाउट ईच। कंप्यूटर स्टेशन में इंडिविजुअलाइज्ड असाइनमेंट्स आप दे सकते हैं बच्चों को कि असाइनमेंट करके लाओ। एडवांस स्टूडेंट अपने आप असाइनमेंट कर लेगा। रिसर्च बेस्ड दे सकते हो, एडवांस स्टूडेंट के लिए आप दे रहे हो। प्रेजेंटेशन बना के लाओ, आप उसको बोल सकते हो, यू कैन टेल द स्टूडेंट। देन यू कैन हैव इंटरेक्टिव एक्टिविटीज, बिकॉज इंटरेक्ट कौन करेगा, जिसको नॉलेज है। सो इट इज डेफिनेटली फॉर द एडवांस लर्नर्स। ऑलराइट, collaborative learning for average students, children who can work in groups, you know, they can't stand separately in front of a crowd and talk maybe. So this is for the slightly average, the medium level students. Hands-on activities, projects, you guide them, you tell them what is to be done and they do it. But on one hand, this is a strategic learning, you know. Strategic learning, you use different strategies for different sets of students, because no student is the same as the second one. All right, so games are another thing. For teacher station, obviously direct instruction is given, the teacher facilitates the discussion, but then asks oral questions. usko ekdam assignment de denge to bachcha kar nahi payega. All right, तो इसमें ओरल असेसमेंट, ओके हैव यू अंडरस्टूड, हाँ क्या समझा बताओ, एट द मोस्ट इतना टीचर कर सकता है, ठीक। लैब रोटेशन में सिंपली लैब और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के बीच में रोटेशन होता है। द स्टूडेंट सिट्स इन द कंप्यूटर लैब, वर्क्स ऑन व्हाट यू हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम, कम्स बैक, इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिसेस इट, मे बी एट होम, देन व्हेन ही नीड्स असिस्टेंस फिर से वो आता है क्लास में वापस आपको पूछता है। So this is the lab rotation. Now in the flex model, primarily the curriculum is designed and meant for online delivery, and the teacher provides on-site support. On-site support means online ही support देता है। Slots book करेगा teacher कि इतना आप calling करिए या chat के through करिए कि आप मुझे you get in touch with me after this 1 hour of discussion will be there. So this is the flex model. Primarily the course or the curriculum delivery is held online, but then difficulty solving, अगर simple language में हम बोलते हैं, that difficulty solving session is fixed. On-site support is provided by the teacher. Now in this method, an online course is delivered in a physical classroom or a lab like this. Course online है, delivery physical class में हो रही है, ठीक है? It's simple. All of you are able to follow it. All right. Self-blend model. Student chooses what to do and when to do. कैसे करना है, इसने डिसाइड किया कि करना है, इसने डिसाइड किया कि ऑन करके लॉगिन करके सो जाना है, ठीक है? तो ऐसे it is, the name itself is suggestive, that is it is a self-blend model. They choose which course to take as online model and which one not to take, and once I take one, the student decides कि इसको कब करना है। सेल्फ पेस्ड है लेकिन मॉनिटर्ड है क्या, मॉनिटर्ड नहीं है तो यू कैन सी नीचे वाला बंदा क्या कर रहा है, मॉनिटर्ड अगर नहीं है तो। ऑलराइट, नाउ दिस इज अगेन a type wherein primarily the
entire course is delivered online, but then projects, assignments, extracurricular activities, they are held in physical mode, they are held in offline mode. So this is how it is happening, it has to happen. Then advantages, as we have already discussed, more flexible and cost effective. We have increased access to all the resources. आपने एक चीज ध्यान दिया, कितने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुए कोविड में? क्यों? क्योंकि हमको बिना खर्चे के, मतलब बिना खर्चे के नहीं एग्जैक्टली, बट देन काफी कम खर्चे पे सिर्फ उनको उनका रेम्यूनरेशन देना था. Flight charges, which are very costly, that, and we invited people from US and from UK and from I don't know कौन से दुनिया के कोने से. So ये access experts का बहुत ज्यादा मिला हमको, या मिल सकता है आगे. More structured, as I said, more student centric, students love it. Higher student engagement, because the student loves it, he is more engaged and involved in it. Anytime, anywhere learning, of course, easy monitoring, as I already said. There are certain disadvantages, definitely. That is the reason जो मैं आपको आखिरी में बता रही हूँ कि मेरे टाइटल में क्वेश्चन मार्क था, if you have noticed. ठीक है, अगर आपने मिस कर दिया तो मैं बता रही हूँ आपको. वो क्वेश्चन मार्क इसलिए था कि हर जगह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है क्या? What do I mean by अच्छा? Proper digital setup means कितने RAM का PC चाहिए, all right? Network connectivity. You must be remembering the days of online teaching wherein your students used to complain about network नहीं है, और ये बहुत अच्छे से करते थे जब आप उनका प्रेजेंटेशन रखते हो, मैम मेरा नेटवर्क वीक है. ठीक है, फिर अब कुछ टीचर्स को मैंने बोलते हुए सुना छत पे चले जाओ. ओके, difficulty of access, obviously you do not have proper network or proper gadgets. चार्जिंग एक बड़ा प्रॉब्लम होने लगा. पीपल वो कहीं लैपटॉप, कहीं मोबाइल, बच्चे का टैबलेट, अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग जगह चार्ज हो रहे हैं. अगर नहीं है चार्ज तो यू आर टोटली हैंडीकैप्ड, इट विल नॉट फंक्शन. ऑलराइट. Then denial of learning opportunities, definitely to the poor students, to the students who belong to the slum areas, to the students who are from rural backgrounds. Network connectivity has not reached all the villages, that is for sure. So that are disadvantages definitely there. Last 2 points, very important: unavailability of trained teachers and unavailability of trained students, technically trained. All right. None of us had technical training. Na teacher ko tha, na student ko tha. That is why I use the word emergency teaching ho raha tha. And we managed somehow, but आगे ऐसा कभी आए तो हम manage word न use करें. उसके लिए ये सेशन ये कॉलेज ने रखा है. And I hope that you will be able to make the best out of this day. And I would, the picture is very significant, definitely relevant है कि आज हमें हाथ मिलाना है टेक्नोलॉजी के साथ, वरना हम पीछे रह जाएंगे. With that note, I would like to take leave, but then if there are any questions, अगर मन में कुछ queries हैं, if it is there in my capacity and understanding, I will definitely try and answer it. Thank you very much for your patient listening. See, different colleges are using different tools. अलग-अलग college अलग-अलग तरीके इसमें use कर रहे हैं. एक ये तरीका है इसका कि आप अगर right from the beginning इसको आप करना चाहते हैं, तो आप एक छोटा सा टेस्ट लीजिए इनिशियली. एक मे बी एक MCQ या ऐसा कुछ टेस्ट लीजिए, या फिर एक मिक्स टेस्ट लीजिए जिसमें, क्योंकि some students are good at descriptive abilities, तो वो टेस्ट लीजिए आप बच्चों का स्टार्टिंग में, और वो बच्चा कैसे परफॉर्म करता है. एक मिनिमम लेवल का टेस्ट रखिए. तो हर कोई अलग लेगा सर, हर कोई अलग. हाँ,
सकता है सर, पर सब्जेक्ट वाइज ही आपको आइडेंटिफाई करना है, हमको मैकेनिज्म बताना है. See, there was no scope for me to talk about the process and the methods that we are supposed to use, because I was supposed to focus only on the technological aspect and blended learning, and it had to be a specified session. But then if it would have been a general session, अब हर चीज का आपको मैं एक बताती थी कि उसको रेमेडी कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल, नैक जो बोलता है कि आप जब स्लो और एडवांस लर्नर्स आइडेंटिफाई करते हो, या फॉर दैट मैटर कोई भी चीज आइडेंटिफाई करते हो, तो आपको आपकी एक वेल डिफाइंड पॉलिसी होनी चाहिए. सो वेदर पॉलिसीज आर इन प्लेस, what happens, you know, in many colleges I have seen, and mostly these days it is happening, कि व्यक्ति बदल जा रहा है, बहुत सारे लोग रिटायर हो गए हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए हैं. पीपल से कि XYZ was taking care of it, अभी वो रिटायर हो गए, अभी हमको मालूम नहीं है, या बहुत अच्छे से मालूम नहीं है, अभी मैं सिर्फ आपको प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, किया मैंने नहीं है. हाँ, झटकने का एक अच्छा तरीका भी है. बट व्हाट हैपेंस वंस यू हैव पॉलिसीज इन प्लेस, even if the person changes, the system runs. तो well defined written policies होने चाहिए, और वो policies को आपको slow advanced learner के question में 200 words में describe करना है कि this is the policy which is used by the college. आप उसको tag नहीं लगा रहे हो बच्चों को, slow learner है तू और advanced learner है तू, उसको आप tag नहीं लगा रहे हो. This is for your record. आप बच्चे को आइडेंटिफाई करके उसको ट्रेनिंग दे रहे हो. मे बी द एग्जाम्पल दैट यू गिव कि ये मैथ्स में बहुत होशियार है और इंग्लिश में उसको 30-35 मिलते हैं, तो वो स्लो लर्नर आपके मैथ्स में नहीं हुआ, इंग्लिश में हुआ, रहने दीजिए उसको. आप मैकेनिज्म बताइए कि ये मैकेनिज्म हम यूज कर रहे हैं और उसको डेवलप करने के लिए हम ये कर रहे हैं. नहीं, पढ़ाने से पहले टेस्ट मतलब उसका बेसिक तो वो कुछ पढ़ के आया है. कौन सा सब्जेक्ट ऐसा रहता है जो बिल्कुल बच्चे ने कभी पढ़ा ही नहीं है? बेसिक टेस्ट मैंने बताया आपको सर पहले, एकदम इतना बेसिक कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग या एप्टीट्यूड उससे पता चलता है. व्हाट डू कंपनीज डू व्हाइल सिलेक्टिंग पीपल? दे गिव अ जनरलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कि उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है. फॉर एग्जाम्पल, एक लॉजिकल रीजनिंग का एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें पहले बॉक्स में राइट साइड में डॉट रहता है, दूसरे बॉक्स में नीचे डॉट रहता है, तीसरे में लेफ्ट में रहता है, चौथा ब्लैंक रहता है, आपको कहाँ डॉट डालना है. तो ये उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और उसका लेवल एक जनरल लेवल तक आपको बताएगा. तो आपके सब्जेक्ट का जो है, जैसे इंग्लिश है मेरा, तो मैं इंग्लिश में एक बेसिक टेस्ट रखूंगी कि इतना एक्सपेक्टेड ही है उससे. दूसरा एक तरीका है जो कई कॉलेजेस कर रहे हैं, जो पीपल फाइंड इट इजियर एक्चुअली, दैट इज द मार्क्स ऑफ द लास्ट क्लास का उसका मार्क्स देंगे. पिछले क्लास का उसका मार्क्स, वो जैसे अभी अगर वो सेकेंड ईयर में आया तो फर्स्ट ईयर के उसके मार्क्स. नहीं, आप उसका जो अभी जैसे वो सेकेंड ईयर में है बच्चा, तो उसका फर्स्ट ईयर का मार्क्स देखिए, आप उसके बेसिस पे करिए. सर वे आउट निकालना है, नैक हैज नॉट डिफाइंड एनी पॉलिसी देमसेल्व्स. ठीक है, नहीं, आई एम नॉट अ पॉलिसी मेकर ऑफ नैक, सो आई कैन जस्ट गिव यू सजेशंस. You can do this or you can do that, both. There are plenty of debatable issues, but we have to find solutions. हमको problem नहीं discuss करना है, हमको solution discuss करना है. उसका जो है there are मतलब innumerable problems. You know, you are talking about Wi-Fi, you are talking about square feet area of the college, per student कितने computers है, you are talking. What about a college in a very remote area where bringing the child itself to the college is a challenge, a task for the teacher? क्या बात कर रहे हैं? I have been in conversation with NAC for a long time, and once I told them that आप अलग-अलग पूरे सबके लिए बनाओ. मतलब हिली एरिया का बच्चा जो कॉलेज जाना ही उसके लिए एक चैलेंज है, वो निकला कॉलेज जाने के लिए पैदल, वो भी लैंडस्लाइड हो गया, वो वहीं रुक गया, ना वो घर जा सकता है ना कॉलेज जा सकता है. तो इन दैट केस आप वहां वाईफाई की बातें करोगे, आप वहां पर स्टूडेंट कंप्यूटर रेशियो बात करोगे, पर फॉर्मेट तो सेम है. तो वी कैन जस्ट गिव देम सजेशंस, बट वी हैव टू वर्क आउट आवर ओन सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकेबल फीजिबल सॉल्यूशंस वी हैव टू फाइंड आउट. तो ऐसे
अलग अलग सॉल्यूशंस हमको निकालने हैं, फुल प्रूफ एकदम कोई नहीं है सर। ये दो कोशिश हम कर सकते हैं, दोनों में से एक हमको करना ही पड़ेगा। तीसरा अगर और किसी को कुछ सूझ रहा है तो वो बता सकते हैं। हाँ, till date we did not have provision for student exchange in colleges. It was existing in universities. स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं जहां एक यूनिवर्सिटी का बच्चा मे बी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यहाँ कंप्लीट कर लेता है और दूसरा कोई दूसरे यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करता है। तो इसके लिए बहुत सारी परमिशंस चाहिए, बहुत सारी मान्यताएं चाहिए और इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल। So and unless it is a part of the policy of the university, हम उसको नहीं कर सकते हैं। So इसमें अपने challenges हैं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स में या फिर टीचर एक्सचेंज। अब मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस व्हाट दे आर डूइंग कि हम कुछ एक पीरियड के लिए हम पूरा, जैसे अभी डुअल डिग्री जो मॉर्निंग में डिस्कस हुआ उसके लिए नहीं, पर ऐसी कुछ दिनों के लिए हमने कुछ टीचर्स को वहां भेजा पढ़ाने के लिए और वहां के टीचर्स यहाँ आए पढ़ाने के लिए। इसको ही टीचर्स एक्सचेंज बोल रहे हैं, फैकल्टी एक्सचेंज बोल रहे हैं। स्टूडेंट एक्सचेंज वही स्टूडेंट्स को भी कुछ दिनों के लिए आप उनके इंस्टीट्यूशन में, ये काम चलाओ मेथड बता रही हूँ आपको, ये एग्जैक्टली जो एक्सपेक्टेड है वो मैंने शुरू में अभी जो बोला, इट इज अ प्योरली थिंग विच इज डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी कि वेदर दे हैव दीज एक्सचेंज प्रोग्राम्स और नॉट। अगर वो यूनिवर्सिटी में वो एक्सचेंज प्रोग्राम एग्जिस्टिंग है तो देन ओनली इट विल बी पॉसिबल। अदरवाइज आपका एक अलग कॉलेज है, आपके लिए कोई वो स्टूडेंट एक्सचेंज ऑर्गेनाइज नहीं करेगा। Anything else? Though it was not related to my topic, but because I had some ideas in mind, I expressed. Yes. Anyone else, please? All right. Yeah. Thank you. Thank you very much for being patient. Thanks for your questions. Thank you very much, madam. Before proceeding further, I would like to invite Honorable Chairperson to deliver his words. Honorable Chairperson, Dr. Panikar sir. Thank you, madam. Am I audible, madam? Madam, am I audible? Madam, am I audible to you? Madam, thank you. Am I audible to you? Talmale sir, am I audible? Yes, you are audible, sir. Yes, you are audible. Yeah. Okay. Thank you. At the very outset, let me place my gratitude to the Honorable Director of Vasantrao Naik Government Institute of Arts and Social Sciences, Dr. Sadhna Shilidhar, the IQAC Coordinator, Dr. Kapil Singhel, for inviting me to chair this session. And I must say at the very beginning that Dr. Subhashree Mukherjee has done full justice to the topic given to her. It was a very well constructed lecture. It was a very well constructed presentation as well. And the last slide was very symbolic of what we need to do in the times to come. हम सभी ने ऑनलाइन लेक्चर्स का समय देखा है बहुत. I mean, as Subhashree said, it was emergency teaching rather than online teaching. We did not have the skills initially to negotiate what we were asked to do. We were not even technologically that savvy initially, and we had our challenges. And just imagine if we had our challenges, what would have been the condition of our students. Subhashree was very honest about the challenges of online teaching, and I personally agree with her that
blended learning is, of course, the need of the hour. We all know that the Honorable Finance Minister announced the setting up of the digital university, a world-class digital university in her union budget. And we don't know how it's going to come up, but yes, these kind of universities are going to be the future of our higher education, at least. But that does not discount the role of the traditional classroom teaching. I mean, for teachers like us who operate from small places, to use that kind of a term, हम सभी लोग जो छोटे छोटे गांवों में काम करते हैं, हमारे लिए, जैसे डॉक्टर शुभश्री मुखर्जी ने बताया, कि सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि कनेक्टिविटी होना। दूसरा, मैं हमारे खुद का मैं बताता हूं कि ऐसे कई बच्चे थे जिनके घर में दो पढ़ने वाले बच्चे थे और एक मोबाइल था, कई लोगों के पास तो एक भी नहीं था। तो ऐसे बच्चों के लिए क्लास अटेंड करना भी एक चैलेंज था। हमारे लिए 30-40% हमारी अटेंडेंस होती थी। गवर्नमेंट से कई बार हमको इंफॉर्मेशन मांगी जाती थी कि कितने % बच्चे वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। 100% ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो आई सपोज वी ऑल शुड एक्सेप्ट कि 50% के ऊपर तो किसी की भी क्लास में अटेंडेंस नहीं रहती होंगी। बहुत सारे जगह पे तो 30%, 40%, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी। अगर कनेक्टिविटी होती तो उनके पास हैंडसेट्स नहीं थे। इफ दे हैड द हैंडसेट्स, ऐसा होता था कि जो दो बच्चे हैं उसमें से जिसकी एजुकेशन ज्यादा प्रायोरिटी वाली रहती थी, फॉर एग्जांपल कोई 12th स्टैंडर्ड का बच्चा हो घर में, तो उसके लिए वो अपने भाई या बहन जो BA फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं, BA सेकेंड ईयर पढ़ते हैं, उनके लिए मोबाइल हैंडसेट उस समय तो प्रायोरिटी नहीं थी। 12th का जो बच्चा था उसकी एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। तो ये सारी चैलेंजेस तो हम सभी ने देखी है। एंड आई मस्ट से दैट आवर स्टूडेंट्स आर एंजॉयिंग the traditional classrooms once again after 2 years. It's a very refreshing experience for them. And as Subhashree Mukherjee said, ki teaching on a say laptop screen, on a desktop screen, blank desktop screen, when you don't know, I mean, how the students are reacting to your lecture. बहुत सारे लोग तो वीडियो ऑफ करते थे। हम कई बार बच्चों को बोलते थे वीडियो भी ऑफ कर दो, क्योंकि बैंडविड्थ लगता था, उसके बैंडविड्थ कंज्यूम होता था, तो उसका वो भी एक इशू रहता था। तो बच्चे ब्लैंक क्या कर रहे हैं, नोबडी आई मीन न्यू। और कई बार बच्चे भी ऑफ हो जाते थे, कहीं चले जाते थे, ट्रैवल करते रहते थे, बस वो सर को रेस्पेक्ट करने के लिए कई बार लेक्चर्स अटेंड करते थे ऑनलाइन। नाउ दे आर एंजॉयिंग दिस ट्रेडिशनल क्लासरूम्स वंस अगेन। लेकिन अभी भी हमारे लिए चैलेंजेस है कि जैसे व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ slow learners, can we think of I mean making some videos and putting up on the YouTube so that they can see those lectures as and when time permits, as and when time permits। हम सभी के लिए वो एक चैलेंज होगा कि हम कैसे ये ट्रेडिशनल क्लासरूम के साथ साथ जो ऑनलाइन टीचिंग है उसको हम कैसा ब्लेंड कर पाते हैं। एंड दैट इज मोर और लेस ब्लेंडेड लर्निंग। दोनों का हम कोशिश करें कि ऑनलाइन कुछ क्लासेस हो सके उनके लिए, कुछ नहीं तो ऑनलाइन मटेरियल तो हो सके, कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स तो हो सके। जो बच्चे शायद लाइव नहीं अटेंड कर सके, बाद में वो लेक्चर्स यूट्यूब से उठा के देख सके, वो एक एडवांटेज है। ऑनलाइन टीचिंग में एक और एडवांटेज हमारे लिए रहा कि आवर स्टूडेंट्स कुड गेट एक्सेस टू टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। आई रिमेम्बर हमारा कॉलेज उन कॉलेज में था जहां पे हमने 3-4 कॉलेज से मिलकर कोलैबोरेटिव क्लासेस रन किए थे यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए। और यूनिवर्सिटी के जो बहुत सारे टीचर्स है जिनका कभी टीचिंग हमारे बच्चों ने देखा नहीं था, अच्छे टीचर्स का भी एक टीचिंग का एक्सपोजर उनको मिला। लेकिन मैंने बताया जैसे कि कनेक्टिविटी का इशू थे, टेक्निकल चैलेंजेस तो रहेंगे, बट समहाउ वी विल हैव टू मैनेज। हमको हमारे पास जो नॉलेज है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके बच्चों के लिए बाद में उनके कन्वीनियंस से देखने के लिए कोई ना कोई प्रोविजन करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से वो ब्लेंडेड लर्निंग ही हमारे लिए एक आगे का रास्ता है। बहुत सारे क्वेश्चंस को मेरे ख्याल से बहुत ऑनेस्टली हैंडल किया, आंसर भी किया डॉक्टर शुभश्री मुखर्जी को।
Mukherjee ne, and I must congratulate her for the wonderful lecture and the presentation. And I hope that just as I, as a chairman, I have enjoyed the lecture, you must have also enjoyed the lecture. You must have also enjoyed her presentation. टेक्नोलॉजी का ही मदद है कि मैं आज कॉलेज से निकल नहीं पाया, मैं आज आपसे ऑनलाइन जुड़ रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको बहुत सारे लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आप सभी का प्रेजेंस मैं फील कर पा रहा हूँ. And I know that I am sitting between you and the lunch. I mean, Subhashree's job is over, but I suppose you had a wonderful lecture and you had some wonderful food for thought. आप जब खाना खाए तो बहुत सारी चीजें जो सुभश्री ने बताया उसके बारे में सोचिए भी. Once again, thanking the organizers for inviting me to chair this session, and congratulations to Subhashree for delivering a wonderful lecture. Thank you so much. Here I am to conclude and to offer a vote of thanks. Friends, the lecture delivered by Professor Mukherjee ma'am was extremely thoughtful and very much contributing in our thought process. Ma'am, you started with the going beyond chalk and talk tradition method to technological method. And while this journey, which problems we have faced during the Corona period, as well as post-Corona, what are the challenges? Ma'am, at the outset, you cited that while technological method, while using technological method, authentication of resources should be done by we academicians. We have to maintain the collaborative application-based learning process, which has to be initiated at a personal academician level. You also proposed and brought it up to our table about the module courses that every department should be assigned the work according to the specialization and expertise, so that we could score more marks. To draw practicable solutions to the challenges of the students of the three varieties, that is low, or sorry, I should say slow learners, then average, and then advanced students. You also brought into light the positive aspect of the load to class in watching attendance, time spent by the student, self-study done by the student, as well as the global connectivity of the student as well as academician. As per the Madam, you also cited or brought light the 1st June 2022 Criterion 2 guidelines focused on slow and advanced learners with the help of varying techniques, technology, and methods. You cited exposition, instruction, guidance, discovery, and exploration methods we have to inculcate in our daily life, that is academic daily life. You also cited the concentration and very much importance to why blending learning should be there, because we have been in a traditional teaching, then we face digital learning and teaching process during Corona, and now we are in the post-Corona period. You also cited that need to concentrate on learning outcomes, as this criteria, it carries 90 marks of marks for each question, which incorporates drafting, then actual mapping of outcomes, evaluation, and attainment of the course. Thank you, Madam, very much for citing these blending learning to the module courses at institutional level, which is very must as per the new education policy, and we have to get connected with the global level teaching and learning process. You just conversed with the 8 models of, 6 models for overcoming the slow, average, and advanced learners. And after the thoughtful conversation, you also cited what are the challenges
we are facing and what challenges we face during the digital learning and this process because our rural life, Indian rural life or hilly region area, geographical obstacles or limitations are there, and urban cities with the social-spatial variation or economic variation, all students are facing various problems, and there is one college and we have to work in diversified environment. Thank you, madam, very much. And sir, may I come to your good name, please? At the end of the session, Dr. Chandu Patil, through Dr. Chandu Patil's conversation, many academicians might have come across the solutions of the very basic questions. Really, that question might have lighted in our academic life. That is how to identify the slow learners or advanced or average students. Regarding that, madam very authentically accepted that this is not her, her domain, but even though he suggested very few, methodologies and techniques to overcome for identifying the slow learners. Thank you very much, madam, for this thoughtful conversation. And honorable chairperson, sir, he gave backup with the words. He praised the speaker's words and deliberation. It was well constructed. It was honest. This word was very important for madam's deliberation, that it was very honest, because she put light on both the aspects of the digital as well as traditional learning teaching process. Sir, you also put the challenges that in the rural areas there is a connectivity problem, then like infrastructure, for example, handsets and connectivity. These are the challenges, even though you also very honestly accepted that after 2 years, students are enjoying traditional classroom teaching learning methods. So you suggested that different teachers must be made available to the rural and the hilly as well as the urban students, so that their teaching learning process must be enhanced or can be enhanced. And with the biggest challenge, that is to mend the traditional teaching as well as the digital teaching. You appreciated the thoughtful conversation. Thank you very much, sir. I hereby, by the permission of, is there any question or any conversation? Thank you very much. By due permission from the honorable chairperson, may I say that this session is, thank you very much, sir. This session is over, and all delegates, resource person, all the delegates, participants, students are invited for the lunch. Thank you very much.